हाय आई एम डॉक्टर हृदेश एमडी इन हाइट इंक्रीज इन्फो। तो एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आ गए हैं हम। जो हमारे पेशेंट हैं, क्रॉस लेंथनिंग किया है इन्होंने, ही अचीव्ड 12 सेंटीमीटर। तो आज जानेंगे इनकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या डिफिकल्टीज आई इनकी ड्यूरिंग लेंथनिंग, और अभी ये 12 सेंटीमीटर गेन करने के बाद कैसा फील कर रहे हैं सर। Hello, Dr. Harry, and hi to all viewers. So, about me, मेरे बारे में, I am a person. I'm from south part of the country, and I'm in mid 40s. So I'm a working professional, and मुझे करना था. I always had this thing about lengthening my height. तो मैं बचपन lot of like 10-20 साल से सोच रहा था मैं कि बढ़ाने के लिए. तो सबसे मैं रिसर्च कर रहा था. But of late 10-20 साल से almost yes 10-20 years. Since my mid 20s and early 20s I was trying to research. तभी था, but हाँ मुझे था कि थोड़ा हाइट बढ़ाना है, और मैंने बहुत कुछ एक्चुअली ट्राई भी किया था हाइट बढ़ाने के लिए, like lot of physical things की jumping, stretching. That was in my mid 20s I tried. वो ट्राई कर रहा था, but उससे ज़्यादा कुछ फर्क एक्चुअली आया नहीं. Lot of things I gave my 100% in that. Almost 2 years I tried. आया मतलब 1.5 centimeters, but that's about it. उससे ज़्यादा even after giving 150% उससे ज़्यादा नहीं आया. So then I thought ठीक है बाद में देखेंगे. Then I was busy with my work, and ठीक है जिन last 2 years से I was still trying to do it, क्योंकि I want to give myself I mean just do that in this thing. तो try कर रहा था. Then I met Dr. Harry through YouTube. the same उनका YouTube videos देख रहा था. To know about the journey, I was last 1 year काफी intensely से मैं ढूंढ रहा था. Then I came through other YouTube videos and everything. Then through other YouTube videos I saw Dr. Harry's video. हाइट इंक्रीज इन फोन का देख रहा था. सो आई वाज एक्चुअली देखिए बहुत खुश हुई, क्योंकि 1-2 वीडियो देखने के बाद मुझे आई वाज 100% श्योर कि दिस इज हैपनिंग यहाँ पे इन गुड़गांव इन दिल्ली. इट्स डेफिनेटली हैपनिंग. तो बहुत खुश हुआ था मैं. देन आई ट्राई टू सर्च इन माई प्लेस कि अगर हो रहा है तो बाकी जगह में भी हो सकता है करके. बट नहीं, जितना मैंने पूछा था, डॉक्टर्स आर सेइंग यस, बट एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू कन्विंस मी कि ना, दे वर नॉट एबल टू शो मी रिजल्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो देन आई डिसाइडेड कि अगर करना है तो गुड़गांव में ही करना है. हाइट इंक्रीज इन फॉर डॉक्टर हैरी. दैट इज द ओनली प्लेस वेयर इट इज बीइंग डन विथ ऑथेंटिसिटी and honestly, and they are showing 100% results. So just looking at the video I was convinced. First then we spoke and everything. Then okay, why do you choose cross lengthening? मतलब cross lengthening ही क्यों choose किया आपने? हाँ जी, cross lengthening because एक ऐसा प्रोसीजर है. This is one of the most complicated procedures in the world, क्योंकि it's not just about the surgery. Surgery itself is a little complex because अपना हड्डी तोड़ के आप nail set कर रहे हैं, then frame set कर रहे हैं. So it is a complex thing, and not just the surgery. The journey is also very complex, क्योंकि अब you'll have to invest depending upon जो कर रहे हैं आप, like 5 to 8 months of your life you have to invest in this. At this, I thought at my age, मेरी उम्र में I cannot keep doing this over and over again. So it is like one shot to achieve my goal. मैं उसका सब एक साथ ही कर लूँ. Whatever it takes, I can do it together, and I want to get the maximum possible height. क्योंकि this is अभी my dream is in my hand. अभी I can achieve it. So why not get the maximum thing? So that was the thing. That's why I went for cross surgery, where I can get more. The maximum was close to 12 centimeters plus. I chose 12 centimeters around, and that's why I cross surgery, so that I can get everything, the maximum possible result. And cross lengthening is good because आप in 6 to 8 months, in 8 months time, around 6 months में आपका journey खत्म हो जाएगा, and 2 months of then rehab and everything, then that's it. You are done with it. आपको you get your maximum height, you achieve your goal. That's why I chose. How was your lengthening journey? मतलब 6 month आप फ्रेम में थे, मतलब कैसा गया आपका, कैसा क्या एक्सपीरियंस था? This is a tough process. मतलब प्रोसेस तो टफ है. एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट दैट इजी कि आपने पैसा दे दिया और हाइट खरीद लिया. तो द पर्सन हु वांट्स अंडरगो दिस शुड आल्सो बी मेंटली कंडीशनड टू गो थ्रू दिस प्रोसीजर. दिस इज मतलब इट्स टफ है, इम्पॉसिबल नहीं है. यस, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट दिस प्रोसीजर टू गेट हाइट. मतलब एट दिस एज आई वांटेड टू डू इट, क्योंकि व्हाई नॉट, क्यों नहीं करें. क्योंकि अभी मैं सोचा, मैंने बचपन से ही मेरा ड्रीम हो, इट वाज माय ड्रीम. तो जब मुझे एक चांस मिल रहा है तो क्यों नहीं करूं. व्हाई नॉट. पीपल आस्क व्हाई, आई से व्हाई नॉट. तो पीपल शुड, एज इज अ नंबर, एंड अगर आप फिट है तो यू कैन, योर बायोलॉजिकल एज कैन बी मच लेसर देन योर फिजिकल एज. सो एज इज जस्ट अ नंबर. इट्स लाइक मेंटल इनसाइट भी दैट आल्सो मैटर्स. एंड आई वाज रेडी फॉर दिस जर्नी मेंटली. आई न्यू कि ये टफ होने वाला है. सो जर्नी वाज नॉट वेरी इजी. मैं बोलूंगा कि यस, पीपल शुड बी रेडी फॉर इट, कि इतना आसान रहता नहीं है, कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. आपका हड्डी टूटता है, एंड देन देयर इज अ नेल इंसर्टेड, फिर आप इसको एक्सपैंड कर रहे हैं. देन इट इज टफ, बट उतना भी इट वाज नॉट लाइक वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल. इट्स हाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो मेरा तो आई मीन 8 महीना निकलने के बाद आपको लगता नहीं कि आपका जर्नी इतना टफ था. बट ड्यूरिंग दोज टाइम्स, यस, देयर आर सम अनकंफर्टेबल मोमेंट्स आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. सम पेन लिटिल बिट हियर एंड देयर.
एंड मेरा कंडीशन भी मेरा ऐसा कंडीशन था कि मेरी हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती थी. दैट वाज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन एज सच, इट वाज अ कंडीशन व्हिच डेवलप्ड बिकॉज ऑफ माय फिजिकल नेचर. तो बट इट वाज वेरी गुड. तो बिकॉज ऑफ डॉक्टर हैरीज इंटरवेंशन एंड हिज एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग सिंस वाज स्पेशलाइज्ड, वी वर एबल टू नोटिस कि क्या हो रहा था, एंड वी सॉ कि इट्स नॉट हैपनिंग, बट इट वाज देयर. देन वी हैड डू रीसर्जरी टू ब्रेक द बोन अगेन, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड हैपेंड. सो दैट इनिशियली इस स्टेज में फीमर जुड़ गया था लेंथनिंग स्टेज में, बट एट दिस स्टेज हमें डर रहता है कि हड्डी नहीं जुड़ेगी, बनेगी नहीं, लेट बनेगी. बट so people don't have to be afraid ki, can they do it at this stage, at this age or something like that. It just depends upon your physical ability and your bone strength and stuff like that. So yes, people can do it. So हड्डी जुड़ गई थी, and actually it's a very good condition to have, but इसमें it was a setback in this thing जहाँ पे हड्डी को distract करना था, वो थोड़ा एक setback था, but it was okay. We had to go for under surgery to distract it, and that's it. ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि there can be hiccups in this surgery, but height increase info team under Dr. Harry, they are very experienced, and they know कि every day they give personalized attention to everybody, and every day they are monitoring people, so they know what is happening, and उसके हिसाब से we were able to immediately notice what is happening and rectify it. So we were working, I mean they are specialized enough to work around the condition. तीन की उन्होंने they have seen, because ऐसा नहीं कि मेरा condition ऐसा है, and it depends upon the completely upon the person's physical ability. Everybody will have a different experience. That's what I've seen. इतने लोग आके जा चुके हैं. There are so many people who came and did and went in my tenure. तो सबका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था. ऐसा नहीं कि जो पेन मैंने एक्सपीरियंस किया उन्होंने सेम पेन एक्सपीरियंस किया, उनका एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट. एवरीबडी हैड वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. तो डॉक्टर हैरी गेव पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड ट्रीटमेंट टू एवरीबडी. So that was the best part. So that's why we were able to overcome whatever complications were arising. We were able to overcome. And finally I'm at the end of my journey. हो गया. So ओके. एंड एक्टिविटी कैसी थी ड्यूरिंग लेंथनिंग? आप अपने को मतलब कैसे मैनेज करते थे? स्लीपिंग पैटर्न और डेली एक्टिविटीज? डेली एक्टिविटीज मेरे लिए इट वाज लिटिल, बिकॉज क्रॉस लेंथनिंग के टाइम में सो मेरा एक्चुअली थोड़ा आई कुड नॉट बेंड माई लेग्स मच, सो आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई टाइम इन बेड, बट आई वाज रेडी फॉर इट. इतना ये भी नहीं था, टाइम निकल जाता है. बट देयर आर मेनी अदर पीपल, सो दे हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, एंड दैट प्लेस इज फुली एक्टिव. जिनका टीबिया का चल रहा है, इवन क्रॉस लेंथनिंग समबडी, मुझसे पहले भी एक one gentleman did cross lengthening, and he was more active, he was more mobile. There are many people who do walking on a regular basis with frames tibia के साथ, so they are very mobile. चेयर में घूमते रहते हैं सब लोग, so they don't need much of assistance. तो after some time, थोड़ी देर के बाद I was also able to be a bit mobile, but मुझे थोड़ा टाइम लगा. But that was it. But you have to be ready for any kind of hardship. Then it is okay. उतना भी difficult नहीं है. तो अगर आप mentally prepared है, तो everything is possible. When I can do it, I think anybody can do it. So it is filled with people with various age groups. वहाँ पे guest house where people are staying. There are almost at any given point of time 10 patients तो रहते ही हैं. There are 10 people undergoing limb lengthening, various kinds of limb lengthening like tibia and cross and things like that. And it is buzzing with activity. सब लोग रहते हैं, and somebody is walking, somebody is working out, and there is a common hall, meet करते हैं. So it's very lively. And when it is very lively, you don't, because everybody is there with a common agenda वहाँ पे. Everybody is there for limb lengthening, and everybody is experiencing some kind of pain or the other. So everybody understands each other, and it's all fun and frolic. तो time जल्दी पास हो जाता है. So you don't really feel कि you're alone and experiencing it. There are a lot of people who are also doing the same thing, and because of that, and it's very lively, and the time passes quite fast. अभी at the end of the journey आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे तो 8 महीने ऐसे निकल गए. There are people who finish in 4.5, 5 months and all. उनका तो बहुत ही जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकला. By you get taller and then you walk away. That's it. So, अगर बात करें प्रोपोर्शन की, तो अभी आपको अपने प्रोपोर्शन में कुछ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि अगर हम क्रॉस लेंथनिंग कराएंगे तो क्या हमारे हाथ छोटे हो जाएंगे? ये बहुत क्वेश्चन आता है. तो नहीं जी, generally what happens is the upper body is always taller. Only the lower body is slightly underdeveloped for people who are short. Generally आप देखेंगे तो, and limb lengthening के बाद अगर आप फोटो देखेंगे, जितने भी मैंने भी देखे हैं, your body becomes more proportional. So your body becomes what it should be in relation to your upper body. तो maximum आप देखिए टिबिया करेंगे या फीमर करेंगे, you'll do maybe 6 to 7 centimeters. That's not much. ऐसे आप नापेंगे तो ज्यादा नहीं है, but it makes a lot of difference to your persona and your proportion. Limb lengthening के बाद the proportion becomes much better. अबाउट हैंड के बारे में मोस्टली क्वेश्चन आता है. Hand, no, nothing like that. Usually people's hand are in proportion to their upper body, their torso. And hand तो वैसे ही तो लंबा रहता है. And upper body and hands are already tall for people. And when you do stretch your lower limbs, they become more proportional. So there is absolutely no problem about not being proportional. You get more proportional and you look more complete. So hands का just यूज ये कि पॉकेट में जाने चाहिए, अपना डेली रूटीन के बेसिक काम हैंड से हो जाए. And mostly सबका हाथ तो अपना अपर टॉर्सो के रिलेशन से होता है, एंड टॉर्सो सबका ऐसे ही लंबा तो होता ही है. मोस्टली इफ यू
you see everybody, the torso is already long and only the lengths are shorter, the calf tibia could be shorter and stuff like that. So hands they're already in proportion to upper body, and upper body is always longer than your legs. So आप करेंगे तो is always in proportion, so there is absolutely no fear or doubt for anybody, any normal person. Okay, if somebody has got some other complication अलग है, but any normal person, if he's doing limb lengthening, he will look only more proportional and hands will look better. So you want to give any advice के जो limb lengthening कराना चाहते हैं या फिर जिनको सोच रहे हैं कि कैसे? Yes, देखिए जी, because gaining height is kind of an impossible dream for a lot of people, and it is actually impossible because after your puberty, once your bones fuse, आप ज़्यादा gain नहीं कर पाएंगे. So that is one thing which people cannot achieve. बाकी सब आप कर लेंगे, कर सकते हैं. You can buy anything else, but this is the only procedure through which you can gain height after your bones fuse. After 20-22 साल के बाद आपको यही करना पड़ेगा. There is nothing else you can do because मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने जान लगा कि ट्राई किया, पर I realized this is what I can do. तो मैंने किया था. And yes, if you have this thing and it is placed like in India and it's available at this cost and with these facilities, anybody who wants to do it should definitely do it. I mean, when you can do it, do it. देखिए अभी आपको करना है, आप वो कर सकते हैं, कीजिए. It's good. It's if that is all you wanted, it's always do it. Very important thing is, देखिए this is a very complex surgery. It's not just about surgery. It is a full journey. And there are many. इधर आने के बाद it's very regular for us to see. I mean the patients inside this thing that there is always somebody जो बाहर कर लेते हैं, वो किसी से और से कर लिया उन्होंने, and then उन्होंने ज़्यादा पूछताछ नहीं किया, and he got the surgery done, and then surgery was not done properly, और surgery के बाद उनको completely they left them in the lurch, neglect कर दिया. तो उसके बाद I've seen many people come to Dr. Harry and the high technical team for because they were always left. इनको complicated हो गया तो उसके बाद इधर आते हैं. After complication they come here to rectify the situation. So please do a lot of research, and I did my research. मैंने research किया था, and this is why I chose height increase info. The most important thing is यहाँ पे they take complete responsibility till the person. I mean जब person जब आता है and till the time he leaves the place walking, till that time they take complete responsibility for that person. They take complete care of him. आपको किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. Physiotherapy, staying, food, lodging, everything is taken care of. To the extent कि यहाँ पे many like limb lengthening patients they had complications due to their physical condition. किसी को कुछ some gallbladder, he had some gallbladder infection due to his existing condition. He was also treated. So it's not just limb lengthening. They take complete care of the person who comes here. उसके बाद one person had COVID, few people had COVID also. They were also treated for that. So everything, it's a lot of things were done. अगर if the person requires more special medical attention, COVID के time में IV देना उनको, isolation, so many things were taken care of. So that kind of dedication and commitment you can give only when you are a specialist at your job. So High Technical Info, they are very experienced under Harry, and that's the reason I came here, because बाकी सब कर सकते हैं, कोई बोल सकते हैं आपको कि हाँ हम लोग सर्जरी कर देंगे उसके बाद आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हैं. आप नहीं कर सकते क्योंकि people don't know about the surgery is very complicated and there can be so many things which can arise. कोई infection हो सकता है and आपको अगर पता नहीं है क्या करना है तो आप you will be left in the lurch. And देखिए the main reason people come here is to not compromise on their abilities. मतलब आप lengthening से पहले कैसे थे, you want to just go taller with the same abilities. That is important. You don't want to sacrifice any of your abilities. So Height Increase Info is the only place, I mean, where you can achieve it. I think from what I have researched, this is probably the only place in India where they have given such results, 100% results for so many people. At any time there are 10 patients, and rotation में जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं. There are at least 10 to 12 patients who are staying and who complete their stuff and go and walk away and go. This kind of results at this magnitude, I don't think anybody else is doing it. So if you have to do it, ठीक है. अगर if you know some doctor personally, always go to a person who is giving assurance that like right from starting to end we will take care of you. Because if you think आप हाँ मैं सर्जरी कर लूंगा बाकी separately करूंगा, that will not happen. There are so many complications which can arise, and अगर आप सर्जरी किसी और से कर रहे हैं, फिजियो किसी और से कर रहे हैं, then people might not know, and बहुत से लोग ये जानते भी नहीं हैं. So it's better not do outside, and I would say that from my experience, Height Increase Info is the best place. If in India, it's like it's a double whammy for you, like it's very near to you and doing it. Even if people are abroad also, I mean, this is a great place to come because this is where it is done genuinely and 100% results are given. So don't fall prey to somebody else who is saying कि हाँ हम कर देंगे नहीं करते. No, that is very dangerous. Maybe somebody can say हम और थोड़ा कम पैसे में कर देंगे. No, don't put your life at risk because your future will be in jeopardy. अगर आप चल नहीं पाएंगे तो then what is the point in doing all these things? So because this is a complex procedure, but under the hand of experts and specialists, it is handled very well and things are done properly. If the person doesn't know what he's doing, because patients को ज़्यादा पता होता नहीं, they know overall कि what is happening, but they won't have an idea of what all complications can arise because for each person the complication can be very different. So it's only in the hand of experts is done. So I would say this is probably the best place to come and do limb lengthening. So if you have an intention of doing it and if you want to do it, then please come here and get it done. तो ये था सर का इंटरव्यू और अभी सर को 8
8 मंथ हो चुके हैं। अभी ही इज वॉकिंग विद एल्बो क्रच से वॉक करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी का हम देखेंगे सर का प्रोग्रेस, मे बी आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ विल पुट ए स्मॉल वीडियो प्रोग्रेस का। थैंक यू। तो अगर आपका कोई भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, LLD है या फिर कोई ट्रॉमा है, तो आप जो हमारे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।